Okay, so we have started with Microsoft Excel last time, and we have discussed a few basic things. Rather, I can call it an introduction, brief, more than a brief introduction. And now we will talk about we will be diving a little deep into the Microsoft Excel. Microsoft Excel, as I told you in the last lecture, that Microsoft Excel is an application software, a numeric-based application software, which is used to solve your all the numeric problems. Numeric problem means problems regarding calculations, problem regarding analyzing your data, managing your data. So it works around your data, especially the number data. So we have seen different things which are given by the software. Uh, we open the software. I'm sharing my screen. Uh, okay, my screen is shared. So now, when we talk about Microsoft Excel last time, you can, because someone asked me that which version should I use. So you can use any of the version. That doesn't make any big differences. Since we right now we are working with the formulas and functions. So when we are working with the formulas and functions, they work in the same manner or in the same. So when we talk about the interface, last time we have discussed about the interface, so I will not talk about it. So I'll select it and do that. Okay, so we'll be starting with basic arithmetics. Now, what is meant by the basic arithmetic? Basic arithmetic means the basic calculations. The basic calculations mean ये जो हम plus, minus, multiplication, and division use करते हैं, these are the basic arithmetics. So when we talk about the basic arithmetics, तो वी ऑल नो कि बेसिक अरिथमेटिक्स जो है यही अगर इसका कॉम्बिनेशंस को हम यूज करना शुरू करते हैं तो वी कैन डू वंडर्स. Basic arithmetics. When we talk about the basic arithmetics, so first of all we'll do the addition. You may know, but I just want you to know that the way we can do that. So we are talking about the addition. When we talk about the addition, what we can do, how we can do that addition. Let's say I have a number 1, 2, and I have a number 3, 2. Like I have two numbers. But before than that कि हम इसको देखें, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं cell reference. Few used to call it cell reference. Few used to call it cell address. यानी कुछ इसको जो है वो cell address भी कहते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको cell reference भी बोलते हैं. This is very important. Cell address और cell reference का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि देयर आर number of columns and every column has a unique name, whereas when we talk about number of rows, every row has a unique name, unique columns and rows के unique names हैं. And the interesting thing is कि ये column और row जिस जगह के ऊपर intersect करते हैं, that is column, that has been called as a address, cell address. ये cell reference is symbol. Now, if I want to figure out the cell address, now what we can see कि जो मैंने select किया हुआ है उसके जो correspondent हमारे पास column है that has been called as J और उसकी जो correspondent row है that is 5. It means कि this cell address will be called as J5. This is J5. एक चीज जो याद रखने वाली है, you need to remember one thing that we always have to use the column name first. यानी बेसिकली क्या साइंस है, कॉलम नेम एंड रो नेम, कॉलम नेम एंड रो नेम. नो, कॉलम नेम एंड रो नेम मींस इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो इट मींस कि इसका जो सेल एड्रेस होगा दैट वुड बी L6. L6 हो जाएगा. या लाइक वी टॉक अबाउट कि 32 किस में लिखा हुआ, तो 32 जो है वो लिखा हुआ B1. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
because we have to specify whenever we are using formulas or functions, we have to specify the area which we are using for the calculation. तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर्पस के लिए. सो हमने कह दिया कि जी हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं और इनके अपने अपने डिफरेंट सेल एड्रेसेस हैं. नाउ यू कैन नोटिस अनदर थिंग कि व्हेन आई क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक सेल यू कैन सी दिस नेम बॉक्स. ये जो आपको ऊपर इंटरफेस में नजर आ रहा है, दिस इज नेम बॉक्स. ये जो हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज फार्मूला बार. So remember कि आपके पास आपका सेल एड्रेस इनिशियली, इफ यू फाइंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस, तो आपको आपका सेल एड्रेस जो है यू कैन फाइंड इट इन द नेम बॉक्स. बट यू कांट बी डिपेंडेंट, यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट नेम बॉक्स. द रीजन बिहाइंड इट कि कई दफा मैं नेम बॉक्स की, देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैंने कुछ लिखना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली वहां कुछ और लिखा हुआ नजर आ गया. तो आप नेम बॉक्स को ठीक है देख तो सकते हैं फॉर योर ओन, उसके लिए कि अगर आपको नहीं पता लग रहा किसी चीज का तो, बट अदरवाइज जो है इट्स नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस. सो किसी भी सेल पे क्लिक करें, वैसे तो ये हाईलाइट हो जाता है, देखो पी भी हाईलाइट हो गया, 13 हाईलाइट हो गया, तो इट्स प्रीटी सिंपल, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि ये हमारे पास P13 बन गया. नाउ अगर अब मैंने फार्मूला यूज करना है तो वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद, यानी इफ वी आर यूजिंग फार्मूला और फंक्शन व्हाटएवर, सो we always have to start with equal. This equal actually shows the solution. Like our math teacher always taught us कि जी आपने जब सॉल्यूशन करना शुरू करना है तो आपने हर लाइन से पहले जो है इक्वल 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 का साइन डालना है. व्हाई? बिकॉज इट्स शोइंग कि वो हमारे पास सॉल्व हो रहा है, वो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो रही है, वो कुछ इस तरह से करके दिखाना होता है. सो whenever you are using any formula or function, you have to start with equal sign. Like I have put the equal sign here. Now equal, because I want to start with the sum plus, तो मैं क्या करूँगा, sum लिखा, bracket start किया, bracket आपने यही parenthesis small bracket जो है मुझे start करनी है. Now the first cell address, the first cell address is A1. The 12 is written in A1. तो मैंने A1 लिख दिया. तो देखो मैंने जैसे ही A1 लिखा वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी हो गया. Then I have to put the sign of plus, and then उसके बाद मैं करता हूँ, मैं 32 पे क्लिक कर देता हूँ, वो भी हो गया. And for your support, what Excel do कि it gives different colors to all the cells, so that makes visible, आपके लिए जो है वो आसान हो जाता है फिगर आउट कि किसमें क्या काम हो रहा है. सो एक तो ये हमारे पास यहाँ हो गया. अब जब मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा, यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर. सो दैट इज 44. सो दिस द प्लस का हमने एक फार्मूला बना लिया. सो हमने किया क्या, हमने इक्वल का साइन डाला, देन वी हैव टू राइट सम, वी नीड टू स्टार्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट A1 प्लस B1. तो मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये आ गया. अच्छा अब ना इसमें कुछ थोड़ी सी एक आसानी भी है, मैं एक सेकंड तरीका भी आपको दिखा. वो क्या है कि यू कैन क्लिक ऑन द D1, सेम वही कैलकुलेशन करता हूँ इक्वल, बट आई डोंट वांट टू राइट सम नाउ. मैं अगर देखो, एक तो मैं कह रहा हूँ कि मैं A1 लिख लूँ, दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि मैं A1 को सेलेक्ट कर लूँ. मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने A1 को सेलेक्ट किया, then I have to press plus sign and then I need to press 32. That is it. If I press enter, तो मेरे पास A1 plus B1 ये भी हो गया. Now you have two different types of functions doing the same thing, but the first one, this one was a function and this is a formula. Last time शायद हमने बात की थी कि there is a slight difference between formula and function. Formula means when you construct something manually. This is a manual way. And this is when you are using anything with a keyword or it's already defined in your software, तो फिर that would be called as function. The function and formula. आपको एक साइड पे C में फंक्शन नजर आ रहा होगा और D में जो है वो आपको आपका फार्मूला भी नजर आ रहा होगा. सो इस तरह से जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं. अच्छा, आई होप के you have working mics.
Abdullah was facing some problem in the start. So this is how we can do that. मैं लिखने के लिए आपको I'll stop by and you can write it when I have completed with the first part. So अब हमारे पास क्या होगा कि next चीज क्या हो सकती है? अभी तो प्लस हो गया. जाहिर है प्लस के साथ बेसिक अरिथमेटिक्स में subtract minus again it's very important. So now if I want to use subtract या minus, what I can do, I just have to write like I'm writing 41. This is the 41 which is written in this cell, and now this is 11. I want to subtract 11 from 41. अब subtract के लिए we don't have any keyword. What we need to do, we press equal, then we need to press on this 41. Yeah, we can write it. Otherwise, 11 in B2. So what we can do, we have to click minus and we have to write B2. It's the same thing. You can select that cell or you can use that cell by clicking on it. So A2 minus B2, if I press enter, 30, ये भी हमारे पास आंसर आ गया. ये नेगेटिव के उसके लिए सब्ट्रैक्ट के लिए हो गया. Then if we want to use for multiplication, what we can do, let's say I have a value 5 and a value 9. I want to multiply these two values equal this cell A3 into. For into, we need to use this static sign. Static sign is generally available, always available on 8. If you notice your keyboard, it's on 8. By using shift key, you can use that. और अगर आपके पास कीबोर्ड में वो numpad वाला पार्ट भी है तो आप उसमें से भी यूज कर सकते हैं. A3 into यानी B जो है वो हमारे पास क्या है जिसमें 9 लिखा हुआ है, that is B3. और you can select it this way. हमने कर लिया. Now what? कि हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, multiplication हो गया. Now it's time for division. Now if I want to do division, 31 divided by 2 equal this cell. Division के लिए we usually use this slash and then we have to press 2 and then just need to enter. That is it. Now these are the four basic arithmetics we have: plus, minus, multiplication and division. And for doing plus, I have already told you that we can use the function for that purpose. These are the four functions we have used, rather four formulas and one function we have used. If you want to write it, you can write it right now and let me know so we can then move. जल्दी से लिख लें तो मुझे बताएं फिर हम आगे चलते हैं. लिख के मुझे बता भी दीजिएगा कि आपने लिख लिया. Icham, are you done with it? I assume that every one of you have done with it. मैंने माइक के लिए वो कर दिया. आप लोगों को प्रेजेंटर बना दिए. ये मसला अब्दुल्ला को भी आ रहा था. आई होप कि अब शायद मसला हल हो जाएगा. इत्साम आपका भी नहीं चल रहा माइक.
मैंने आपको प्रेजेंटर बनाया, चेक कीजिएगा। अच्छा, जी मेरा माइक चल रहा है, लेकिन वो मैं अभी अपने कंप्यूटर पर नहीं हूँ ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी। मैं अभी अपने फ़ोन पर हूँ, तो इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है, मैंने प्रेजेंट कुछ करवाना भी नहीं है। मैंने प्रेजेंटर बनाया इसलिए कि वो अब्दुल्ला का माइक अटेंडी में काम नहीं कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था कि शायद ये मसला हो, तो मैंने राइट ज़्यादा किए सर। ठीक है। प्रेजेंट मैंने कुछ नहीं करवाना। मोस्ट वेलकम। आई होप कि रामीन योर माइक इज वर्किंग नाउ। अच्छा, सो if it is not, तो हम जाहिर है we can use the chat box. So now what we can do, these are the four these were the four basic function. Now what we can do, हम थोड़ा सा extend करते हैं चीज़ों को। extend कैसे करते हैं? अब जाहिर है यहाँ हमने बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा प्लस का फंक्शन देख लिया, फार्मूला भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ गया। नाउ सम टाइम व्हाट हैपेंस कि हमारे पास एक लंबी रेंज होती है नंबर्स की। लेट्स से मेरे पास नंबर्स ऐसे लिखे हैं, 12 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये नंबर्स है 5 6 7। नाउ आई हैव टू ऐड दीज नंबर्स। या हम कल हमने एक चीज की थी, हम वही करके देखते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो हम ऐसे कर लेते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस एंड देन वी कैन राइट इट वेट। सो वी कैन ड्रैग द डेज, डेज हमने ड्रैग कर लिया। सम फंक्शन का वो एस्पेक्ट नहीं है कि आप बस सेल की रेंज सेलेक्ट करना और सारा सम हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ जी, मैं अभी दिखाता हूँ। सम जो है इट्स सम और एनी ऑफ द फंक्शन। कभी तो वो बड़ी आसानी से भी हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते, क्योंकि वो हम हमेशा जो है वो आपके लिए चीज़ें सेट करके नहीं देता, यानी एक तरतीब में नहीं होती। यहाँ तो बड़ी आइडियली चीज़ें साथ साथ पड़ी हुई हैं, वी आर डूइंग दैट, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। बट वी कैन सी दैट। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो है वो डेज आ गए, और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ जैसे वर्ड शर्ट में बोल्ड करते हैं द सेम वे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट डिफरेंट पेजेस ऑफ द डे, 540, 450, 120, 540, 250, 125, 230, 350, 600. Now I need a total. अच्छा, अब मुझे जो इसके लिए टोटल की रिक्वायरमेंट है, तो एक तरीका तो देखो हमारे पास बड़ा आसान सा हो सकता है, जो हम पहले देख के आए हैं। अगर हम वही करते हैं तो हम करते इक्वल सम, ब्रैकेट शुरू करते, इस तरह करते, फिर प्लस करते, फिर इस तरह करते, फिर प्लस करते, फिर इस तरह करते, फिर प्लस, फिर इस तरह, फिर प्लस, फिर इस तरह, फिर प्लस और इस तरह। वी कैन डू दैट। तो देखें कितना खूबसूरत फार्मूला बन गया, सो कलरफुल। सो वी कैन डू दैट, बट वी ऑल नो इट्स अ प्रॉब्लम। ये कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं हुआ काम करने का। बिकॉज हमारे पास अच्छा तरीका क्यों नहीं हुआ कि आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ गई, और अगर ये कोई 30 डेज के लिए बनाने के लिए कह देता जिसमें वो सैटरडे संडे को भी काम करता है, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। 30 टाइम्स बेशक क्लिक करके आपने प्लस ही लिखना है, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। देन व्हाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स कंप्यूटर्स? तो फिर तो वही काम ही है जैसे हम मैनुअल काम कर रहे थे। Now there is a new concept which is called as range. हम उसे रेंज बोलते हैं। रेंज मीन्स कि व्हेन यू हैव वैल्यूज इन अ सर्टेन ऑर्डर, जब आपके पास वैल्यूज जो है वो ऑर्डर में होती हैं, या तो वो कॉलम में ऑर्डर में होती है, या वो हमारे पास रो में ऑर्डर में होती है, या उसका कोई ब्लॉक बना होता है इन अ सर्टेन ऑर्डर। When we know the starting point and the ending point, and we already know that there is no other values in the between the starting and the ending values, यानी start और end के दरमियान में सिर्फ वही values हैं जो हमें चाहिए, और कोई value नहीं है। So what we can do, अब जैसे देखो यहाँ से अगर मैंने इस्लामाबाद travel करना है, तो I usually say कि जी I am going from Lahore to Islamabad, but that's it। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जी लाहौर से जो है वो गुजरांवाला जाऊँगा, गुजरांवाला
धर्मशाला से गुजरात जाऊंगा, गुजरात से जेलम जाऊंगा, जेलम से ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आगे सिटीज आते हैं, तो मुझे इस तरह जाना है, ये तो नहीं मैं कहूंगा। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ कि वी नीड टू राइट द फर्स्ट सेल, जो मेरे पास फर्स्ट सेल है विच इज I2, then we have to put the sign of colons का साइन रेंज बनाने के लिए, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर लास्ट वैल्यू, दिस वन। देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारा सिलेक्ट हो गया, आई जस्ट नीड टू प्रेस एंटर, मेरे पास वही वाला सेम आंसर आ गया। यानी रादर कि मैं एक एक वैल्यू लिखता, क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं, दिस इज एन अगेन दिस इज एन एडवांटेज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर्स के लिए। कभी अगर आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, और उसके उसके दरमियान में और कोई चीजें नहीं, वो यही चीजें ही हैं, तो बस ठीक है, फिर हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देंगे एंड दैट्स इट। हमारे पास जो है वो एक सेट चीज जो है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी प्रैक्टिस को अगर हम देखते हैं तो ये प्रैक्टिस ऐसे भी हो सकती है, ये नहीं जैसे हम अभी कर रहे थे, ये मैंने कुछ 5 वैल्यूज लिख दी, इक्वल इक्वल सम और ये, और उसके बाद देखो मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता ऐसे एक एक वैल्यू को, और ऐसे भी कर सकता हूं कि सिर्फ पहले लिख के कॉलम्स डाला एंड देन यू प्रेस लास्ट, हो सकता है। सो फिलहाल ये दोनों तरीके भी हो सकते हैं, फ्यूचर में एक तीसरा तरीका भी हमारे पास आ जाएगा, सो ये भी हम कर सकते हैं, बड़ी इजी। अब मैं यहाँ सम यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इसलिए इजी है, अगर मैं सम यूज ना कर रहा होता और मैं वैल्यूज को ऐसे ही प्लस कर रहा होता, तो ये मुझे सब प्लस करके लिखनी पड़नी थी। विदाउट अ फंक्शन यू कांट क्रिएट अ रेंज। अगर आप फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो आप रेंज क्रिएट नहीं कर सकते। तो कॉलम डाल के जो हम रेंज क्रिएट कर रहे हैं ना, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये एक हमारे पास चीज आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जैसे कुछ वैल्यूज है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे मेरे पास ये वैल्यूज है, तो कुछ वैल्यूज को मैं सिर्फ रेड कर रहा हूँ, एंड देन यू हैव टू गिव मी आंसर। I want to add all these red values. कोई भी मुझे एक बंदा बता दे कि हम इसके लिए क्या करें। Any one of you can tell what should we do for that. All the red values. I want to add all the red values I have. Abdullah. So, Abdullah, what do you think? What should we do? I want to add all the red values. अच्छा, वो कह रहे हैं select only red. Let's see. Equal sum bracket start key. Then what we can do? We said select only red cells. अच्छा, ये करते हैं. Then we need to press plus. ये करते हैं. ये तो फजूल काम लग रहा. So what we can do? E11 column signs and this last cell. ये हमारे cell select हो गए. Now what sign I need to put in here? जाहिर है 2135 पे सिलेक्ट करना है, सिर्फ ऐसे तो नहीं सिलेक्ट कर सकता। इफ आई पुट अ प्लस साइन लाइक दिस वे, इंशाल्लाह काम नहीं कर सकता। द एरर, व्हाई द एरर वी हैव? सर वो आपको नीचे क्राइटेरिया दिखाता है, जब आप सम का फंक्शन डालते हैं वो आपको दिखाता है कि आपने क्या क्या देना है। नीचे आपको नजर आ रहा है कि कॉमा है जो नंबर 1 नंबर 2 का। जी, अब देखो ना, हम जब सेपरेटर यूज करते हैं, बाहर आपने सम जो दे दिया,
और वैसे भी ये याद रखना कि वैल्यूज को अगर प्लस करना हो तो फिर तो प्लस का साइन हम यूज कर सकते हैं फॉर 2 3 4 वैल्यूज तो हमारे पास यूज हो सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग रेंज वी कैन नॉट यूज द साइन प्लस वी नीड टू यूज द कॉमा साइन यानी इसकी शक्ल जो है वो एक्चुअली ये होनी चाहिए ये इसकी शक्ल बन गई ये एक्चुअली इसकी शक्ल बन गई अब नाउ आई प्रेस एंटर तो हमारे पास 8 9 5 6 करके जो है वो आ जाता है so we have to use commas because we are already using the word sum तो sum तो हमने बाहर यूज कर लिया अब इसके बाद कॉमा देंगे तो ज़ाहिर है इट्स अंडरस्टूड pretty much understood कि इट्स डूइंग द सम यानी हमारे पास जो है वो प्लस करने का ही काम कर रहा है तो ये एक और थोड़ी सी साइंस हो गई अच्छा अब लेट्स से कि ये इस बंदे ने एक हफ्ते में 2135 कमाए कुछ भी हो सकता है वो डॉलर यूरो रुपीस जो भी कमाए वो 2135 उसने अर्न किया ना मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी एवरेज अर्निंग क्या है यानी हर दिन कितने उसने कमाए सो एवरेज अर्निंग के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं मैं सिर्फ यहाँ एवीजी लिखता हूँ जस्ट फॉर लाइक कि आपको पता लग जाए अब एक तरीका तो ये है कि मैं इन सबको जो प्लस करके आंसर किया वो उसको मैं डिवाइडेड बाय 7 कर दूं 100 there we go we have a average value otherwise what we can do equal average ब्रैकेट शुरू की और उसके बाद मैंने इस सबको सिलेक्ट कर दिया दैट्स इट now you have to press enter there is no need to plus anything there is no need to divide anything you are just using the word average average to write it you need to write it in the full पूरा लिखना है press enter 305 उसकी एक दिन की जो है वो एवरेज बन रही है on an average he is getting 305 for a day so वो 305 जो है for a day ले रहा है हमारे से so this is how it works ये हमारे पास एवरेज का भी एक फंक्शन हो गया यहाँ तक if you have any question you can ask me right now otherwise we will discuss another thing in Microsoft Excel सर yes जो आपने रेड सेल को सिलेक्ट करने का तरीका बताया था प्लीज वो दोबारा बता दें it's not about red cells it's about मैं सिर्फ रेड मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि मैं उनको हाईलाइट करना चाह रहा था ताकि आपको अलग से नजर आ जाए सो what was I doing कि I just need to click on them like I just have to write equal sum write a star and then you have to select your cells this is the way you can select them for a separator you have to use a comma instead of plus comma use किया then you have to select your second value then you have to press a comma again and then you have to select your third value third set of values equal or there is another way equal sum do that then first we have to select our range and then you need to press control आपने प्रेस करके रखना है उसके बाद मैंने 2135 पे क्लिक किया देखो वो ऑटोमेटिकली कॉमा डालता जाएगा कंट्रोल बस प्रेस करके रखना है एंड देन यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर यू डोंट नीड टू क्लोज द ब्रैकेट्स ऑलवेज आपको ब्रैकेट क्लोज करने की हमेशा जरूरत नहीं होती जस्ट प्रेस एंटर वो आपके लिए खुद ही क्लोज कर देगा ब्रैकेट ठीक है तो थोड़ी इधर हियर एंड देयर इफ यू नीड दे आर लाइक हैक्स ये आपके बैंक के साथ नाउ वी विल डू another the real backbone of Excel. That is what? That is if condition. Let's say what I do कि मैं यहाँ जो है I write about 3 subjects. First is math, then we have English, then we have Urdu, then we have CS. Like I have 4 subjects. And the total मैथ जो था वो लेट्स से था हर एक सब्जेक्ट 400 का ही सो हम क्या करते हैं कि वी कैन राइट लाइक 78 87 88
तो इसके बाद हम ये कह देते हैं, कोई और वैल्यूज दे देते हैं थोड़ी जरा इसकी वैल्यू, मिडिल क्लास सी वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज हमारे पास आ गई, 3 किस्म की वैल्यूज आ गई। क्या हमने कहा जो टोटल जो है वो 400 है, यानी जो मार्क्स होंगे दैट वुड बी फ्रॉम 400, 400 लिख दिया हमने। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ आपने परसेंटेज निकालनी है। नहीं, परसेंटेज नहीं निकालनी, पहले आपने निकालने ऑक्टेन मार्क्स। सो इसको हमने किया यहाँ से कट, इसको हमने किया यहाँ पे पेस्ट, एक कॉलम हो गया है। ये हमने डिस्कस किया था इंसर्ट कास्टिंग। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ निकालने हैं, ऑब्टेन मार्क्स आ गए यहाँ, और ऑब्टेन निकालने के लिए हम प्लस का फंक्शन लगा देंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कैन सेलेक्ट दैट, दिस इज इट, ये लग गया हमारा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स यू, दैट यू कैन ड्रैग योर फार्मूलाज। इसको हम ड्रैग भी कहते हैं, इसको हम फिल सीरीज भी कहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात की। Now we can, how we can drag our formulas, we can just need to click on this side and then you need to press click, जो आपका क्लिक होता है उसको प्रेस कर दें और उसके बाद जो है you have to, ये हम कर लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ नजर आएगा कि हमारे पास जो एक्चुअली फार्मूला था वो A2 कॉलम D2 था, लेकिन जब मैं नीचे आया तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने उसको ड्रैग किया है, तो ये एक हमारे पास इसका एक नेचुरल बिहेवियर है जब हम फिल सीरीज या ड्रैग यूज करते हैं कि वैल्यूज जो है वो 1 + 1 + 1 प्लस करके बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऊपर A2 था, नीचे A3 हो गया, और जाहिर है उसके नीचे A4 A5 A6 जहां तक भी आप उसे ड्रैग करोगे वो हमारे पास वैसे ही चलता रहेगा। सो ये हमारे पास तीसरा आ गया जिसमें हमारे पास A4 वगैरह आ गया। ये तो बड़ा आसान हो गया। Now I want to take a percentage, यहाँ मुझे जो है वो I want to take out the percentage। percentage के लिए क्या करूँ? Any one of you, what we can do for the percentage? What is the formula for percentage? There is no function for percentage। ये याद रखिएगा। आप बताइए कि क्या मुझे करना चाहिए। E2 divided by F2 into 100। जी, आमतौर पे ये होता है कि जब हम करते हैं परसेंटेज का फंक्शन यूज करते हैं तो ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। हाउ? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ऑब्टेन, देन वी नीड टू प्रेस डिवाइड साइन, then we need to press the total, then into 100, into 100 कर दिया, एंटर प्रेस किया, मेरे पास 86.25 पहला आ गया। और उसके बाद देखो ये सेम फंक्शन जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, यू जस्ट नीड टू ड्रैग इट। आप इसको ड्रैग करें वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ड्रैग हो जाएगा। तो पहले मेरे पास जो है वो 86 समथिंग आ गया, दूसरा जो है वो 38 वाला भी आ गया, और फिर हमारे पास जो है वो 60 वाला भी एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट हमें नजर आ गया। नहीं, E1 तो नहीं हो सकता ना इंसान। E1 इसलिए नहीं हो सकता कि E1 के अंदर वो क्योंकि कैटेगरी टाइटल्स हैं जी, तो वो नहीं हो सकता हमारे पास। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू आर यूजिंग योर सेल एड्रेसेस, बिकॉज एक्सेल उतना ही समझदार है जितने आप समझदार हैं। आप उसको जो कहेंगे वो करके आपको दे देगा। सो ये हमने उसको कर लिया, परसेंटेज भी निकल आई। अब मुझे निकालना है रिजल्ट। हमने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशन काम ऐसे करता है कि if anyone is getting let's say 50 or above, he will be considered as pass, otherwise fail consider होगा। इंस्टीट्यूशन ने ये कह दिया कि अगर if anyone is getting 50%, he will be considered as pass, otherwise fail consider होगा। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें एक कंडीशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये तो कंडीशन है, और कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो कंडीशंस आमतौर पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करती हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इफ कंडीशन जो है जो हम यूज करने लगे, दैट इज इफ कंडीशन।
सो इफ कंडीशन जो है जब उसकी बात करते हैं तो उसका सिंटेक्स आमतौर पे क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग इक्वल इफ ऐसे ही आना है, ब्रैकेट शुरू की ऐसे ही आनी है। उसके बाद हमारे पास होता है लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, फिर होती है ट्रू वैल्यू, कॉमा, और फिर हमारे पास होती है फॉल्स वैल्यू। So we have three arguments in my if condition. If condition is like a backbone. आज हम सेकंड लेक्चर में एक्सेल के देख रहे हैं और इसने जान नहीं छोड़नी है, कोर्स के अंत तक भी जान नहीं छोड़नी है। जावास्क्रिप्ट में भी हम यही if देख रहे होंगे। So there are ifs everywhere because you want to put your condition on the computer. You want your computer to work the way you want it. तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आया था लॉजिकल टेस्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय द लॉजिकल टेस्ट? लॉजिकल टेस्ट मींस अल्लाह, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन। ये हमारे पास एक्चुअल कंडीशन होती है लॉजिकल टेस्ट। नाउ एज इट नेम शोज, इट्स अ लॉजिकल टेस्ट, तो इट वर्क्स ओनली, नॉट ओनली बट विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। इट वर्क्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। Now, what is meant by the logical operator? You can use greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, और ये जो मैंने साइन बनाया that is not equal to। और अभी जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम इसमें और चीजें भी यूज कर लेंगे, हम इसमें एंड भी लेके आएंगे, हम इसमें और भी लेके आएंगे। So for the time being we have 8 different logical operators which we use for creating a logical test. On the results, on the basis of your logical test, if your logical test returns true, if your logical test succeeded, you will be getting the value जो आपने यहाँ लिखी है, जो यहाँ वैल्यू है वो आपको लिखी नजर आ जाएगी। और अगर आपका लॉजिकल टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो उसकी शराइत पे पूरा नहीं उतरा है, जो भी आपने शर्तें दी हैं, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। यहाँ जैसे मैं बोलता हूँ इफ, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ इफ सिग्नल इक्वल टू रेड स्टॉप, ये हमने कह दिया। एल्स, एल्स क्या हो सकता है? एल्स है ना वो जा सकता है, और एल्स में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वो ये कह सकता है, ये हमारे पास एक इफ लगते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये इस तरह से होता है इफ सिग्नल इक्वल टू रेड देन स्टॉप। ये जो है ये बेसिकली देन के लिए, और ये जो है ये एल्स के लिए। कॉमा जो लगे हुए हैं, कॉमास हैं बेसिकली। सो कॉमा जो लगे हुए हैं ये एक देन के लिए, एक एल्स के लिए। इफ सिग्नल इक्वल टू रेड देन डू दैट, ये एल्स या अदरवाइज जो मर्जी इसका नाम ले ले, तो कुछ और करो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम वहां देखते हैं कि वहां कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, एक्सेल में कैसे काम करेगा। वहां काम करने का तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे इक्वल ब्रैकेट हमने शुरू की, ठीक है ना। नीचे सबसे पहले कह रहे हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट इज व्हाट? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हम ये कह रहे हैं कि इफ परसेंटेज दिस सेल G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या करो? तो शो करवा दो पास, अदरवाइज शो करवा दो फेल। And if you have noticed that I have written pass and fail in double quotes, inverted commas. Why in the inverted commas? Because it's purely a text. जो text होता है, it always come in inverted comma. You don't need to write numbers in inverted comma. Numbers को आपने inverted comma में नहीं लिखना, cell addresses को आपने inverted comma में नहीं लिखना, लेकिन जो आपके पास टेक्स्ट होगा it always be written in the inverted commas. डबल कोट्स भी बोलते, मैं इसको आमतौर पर डबल कोट्स ही बोलता हूँ, बट
आप ज़ाहिर है इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं तो वो हम कर देते हैं। एंटर प्रेस किया तो हमारे को पास आ गया। तो ज़ाहिर है इसके तो 86% है। और जब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ तो देखो हमारे पास इस तरह से पास फेल सभी आ गए। इसको मैं यहाँ से ज़रा कॉपी करता हूँ जस्ट टू शो यू। ये हमने फार्मूला है। ये बनाया है हमने फार्मूला। ठीक है, सो देख लें यहाँ वही चीज़ें हैं। ऊपर हमारे पास जो है इस एरिया में हमारे पास जो है इट्स अ लॉजिकल टेस्ट। This one is our logical test. This is our true value. And this is our false value. वही तीन चीजें हमारे पास नहीं, वही कॉमर्स है, वही सब कुछ है। जरा थोड़ा सा जाहिर है सेल्फ ट्रेसेस वगैरह आ गए। और इसको एक दफा लिखने का मुझे फायदा क्या हुआ कि आई कैन ड्रैग इट डाउन। मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ, तो कई हजार स्टूडेंट्स भी हों अगर मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूशन में, तो मुझे बार बार थोड़ी ना एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो एक ही दफा मैं ड्रैग करूंगा एंड दैट्स इट, डन विद दैट। और हमारे पास जो है बड़े आराम से पूरा हो जाया करेगा। इसको लिखना है तो लिख लें, बल्कि लिख ही लें। फिर मैं एक और चीज दिखाता हूँ, स्पेशली लॉजिकल ऑपरेटर्स, डोंट गेट देम टू राइट। ये इन्होंने डन कर लिया, बाकी भी अगर डन कर ले तो मुझे बता दो। अच्छा, आई थिंक okay, so I hope के कर लिया सबने। So yeah, now we need to talk about grades. When we talk about grades, तो जाहिर है grades भी हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं। Definition for that, एक से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो पास फेल की कंडीशन थी ना, ग्रेड के लिए तो कंडीशन बढ़ गई। ग्रेड के लिए कंडीशन ये है कि भाई अगर किसी के इतने परसेंट होंगे तो ये आएगा, इतने होंगे तो बी आएगा, इतने होंगे तो सी आएगा, इतने होंगे तो डी आएगा। नाउ वी हैव सर्टेन ऑप्शंस। हमारे पास एक से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज आ गए। Now, if we have a more than a one decision criteria, what we can do, we will be using nested if. मैं पेश कर दूंगा बाद में, साथ साथ में लिखिएगा, सब देखिएगा। इक्वल इफ, शुरू कर दी। लॉजिकल टेस्ट, the cell we are referring to, it's the same cell, this one. If this cell यानी G2 is greater than equal to 90, तो स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए या ए स्टार या ए, जो भी आप करना चाहें वो हमारे पास। तो यहाँ तक तो सेम फंक्शन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स सेम फंक्शन जैसे हमने पास फेल वाला किया। कॉमा डालते हैं, देखो यहाँ नीचे भी बता रहा है कि अब आपने देनी है फॉल्स वैल्यू। बट व्हाट आई डू, मैं एक और इंस्टीट्यूट कर दूँ, एफ खत्म ही नहीं कर रहा, मैंने ब्रैकेट बंद नहीं की है। वी ऑल नो, मैथ में जाहिर हो लेवल में पढ़ा हुआ है कि अगर तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे तो वो उतने हिस्से को सॉल्व कर देगा।
तो अगर मैं ब्रैकेट को एंड तक ड्रैग करता रहूं तो मेरा फंक्शन तो खुद ब खुद सारी चीजों को देखेगा। सो इफ दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या करो, तो बी शो कर दो। फिर हम इस तरह से है, इफ दिस सेल इन G2 is greater than equal to 70, तो C शो करो। फिर हम करते हैं if G2 is greater than equal to greater than equal to 60, so we can do B, then if, फिर हमने इस तरह से किया A greater than equal to 50, तो C D E हो गया। अब देखो मेरे पास रह गया U, अनग्रेडेड है, 50 से नीचे तो हम करते ही नहीं कंसिडर। तो u को एल्स में डाल देना। जी, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक नया इफ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कॉमा डाल के जो है वो यही u लिख देंगे। अब देखो मैंने इतनी सारी ब्रैकेट्स ओपन की हुई हैं, सबको ज़ाहिर है मुझे बंद करना है, और जब मैं बंद करता हूँ तो वो आपको नजर आएगा कि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती जाती हैं जिसको भी मैं बंद करूँ, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो मैं तो आमतौर पर बंद नहीं करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, वो मुझे खुद ही कहता है कि मैं कर दूँ आपके लिए काम। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल कर दूँ, आपकी मेहरबानी। और मैंने यस कर दिया, ये मेरे पास भी आ गया। नौ सिर्फ इसको मैंने ऐसे कर दिया, बी भी आ गया, यू भी आ गया, डी भी आ गया। यानी अगर किसी के मार्क्स जो है, लेट्स से कि मैं यहाँ पूरे 100 दे दूँ, यहाँ भी पूरे दे दूँ, ये भी देखो हो जाते हैं। और टेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर हम टेस्ट करना चाहें तो हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। नाउ द फंक्शन इज, मैं इसको वहां ले जाता हूँ। Now this is my function, this is my function। इसको हम एक लाइन के अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरे पास जो है मेरा एक फंक्शन है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली मुझे को ये बताएगा कि हाउ मेनी इफ्स वी हैव, हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव। सो वी कैन सी, यानी मैं नंबर ऑफ इफ को सिर्फ देखता हूँ अगर, तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो है वो एक तो ये इफ है, फिर ये इफ है, 2 3 4 5, like right now I'm using 5 different ifs। You can use maximum of 7 if condition आप यूज कर सकते हैं। It's quite a lot number। यहाँ आपको शायद थोड़ा लग रहा हो, लेकिन ये एक बड़ा ठीक ठाक 7 levels of condition, it's too much। ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, मतलब आप 7 कंडीशंस डिफरेंट दे रहे हो कंप्यूटर को, जैसे आपने यहाँ एग्जाम के मार्क्स के लिए दिए हैं। Now we have 7 different conditions। And in the end, if you have noticed कि देखो हमने क्या किया, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये किया कि हमने कह दिया कि भी ये इफ है इतना, अब इसके बाद आना था फॉल्स। मैंने फॉल्स नहीं दिया, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने एक और नया इफ शुरू कर दिया, फिर मैंने एक और नया इफ शुरू कर दिया, इसी तरह से चलता रहा until we need a u। u जो है that is the only false we have, अदरवाइज बाकी सब ट्रू है। यानी मैं ये कह रहा हूं अगर G2 is greater than equal to 90 तो शो A, else G2 is greater than 80 तो शो B, else G2 is greater than 70 तो शो C, और वो इस तरह से हमारे पास जो है वो चलता जा रहा है।
तो आप 7 यूज कर सकते हैं। जितने आप इफ यूज करते हैं जवाब उससे एक ज्यादा होता है। इसमें देखें कोई अगर सवाल आपके जहन में आ रहा है। लिख लें एंड देन लेट मी नो कि आपने लिख लिया। चलें, दैट्स ग्रेट। कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। If you have any question, you can ask me. Everyone was quiet. They are trying to write this. So I'll end my case here. If you have any question, you can ask me.